दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ASR मीन्स ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन इम्पॉर्टेंट क्यों है जब भी हम AI के साथ काम करते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम कन्वर्जेशनल AI की बात करते हैं तो कन्वर्जेशनल AI कैसे काम करता है, उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो था ASR मीन्स ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। तो बेसिकली ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, अगर आप कन्वर्जेशनल एआई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि ये एसआर ही वो कंपोनेंट होता है जो इनपुट रिसीव करता है बाय वॉइस। मीन्स इफ समवन इज स्पीकिंग समथिंग, सो बेसिकली द मेन कंपोनेंट इज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। क्योंकि जो एसआर है बेसिकली एक्सेप्ट करता है इनपुट बाय लिसनिंग व्हाट द यूजर इज सेइंग। और यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बार नहीं हो सकता, क्योंकि कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई किसी अदर लैंग्वेज में बोलता है। तो फर्स्ट काम एसआर का क्या है? उस स्पीच को सुनना, उस वॉइस को लिसन करना, देन फर्दर प्रोसीजर होती है। इसलिए एसआर हमेशा एआई में इम्पोर्टेंट होता है, और स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जेशनल एआई, सो ASR has more important. So ASR enables spoken language to be identified by the application, laying the foundation for a positive customer experience. If the application cannot correctly recognize what the customer has said, then the application will be unable to provide an appropriate response. So this is a most important thing. If someone is speaking and if machine is not able to listen and not able to recognize that voice correctly, means machine is not going to give response in a correct way, so response can be wrong. So that's why SIR is important, so SIR can listen the voice clearly and correctly. Now the quality of ASR technology will greatly impact the end user experience. Therefore, it is important when evaluating conversational AI application to inquire about the accuracy of ASR model, because अगर ASR model is good, so machine is going to accept voice, or you can say input in a correct way, then machine is going to give a good response or a correct response. तो बेसिकली हाउ डज ASR वर्क, अगर हम बात करें ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन कैसे काम करता है, तो बेसिकली ASR इज ए बिल्ट अपॉन acoustic model that analyze phonemes in order to decipher. Decipher means to convert in normal language the words that will be used by natural language processing to uncover intent, and it can be broken down in three parts. तो बेसिकली एसआर का काम होता है वॉइस को सुनना, उसको लिसन करना, देन उसके बाद आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो उस वॉइस को इंटरप्रेट करता है नॉर्मल लैंग्वेज, so machine can good give the good response. So the customer speak into a device creating a sound wave, and the application, depending on its level of advancement, reduces background noise and normalize the volume, and the sound wave is broken down into phonemes, and those phonemes are connected using analytical model to interpret the intended word spoken. After that, system is going to understand what people is saying or what people is speaking. The more advanced the model, the more accurate that ASR will be able to correctly identify the intended input, or the model will improve over time with more data and experience, but they do also must be properly tuned and trained by the language scientists, so our system ASR easily can understand what user is saying. Now whenever we are going to design conversational AI, so also I already told you how much SR is important, but SR is also facing some challenges, because you know, imagine a customer calling from a noisy airport who has also has a thick accent and bad reception.
So this may even be difficult for a human to understand. So alphanumerically characters are also difficult for SR system to accurately detect because the characters often sound very similar. So this is also a challenge which is faced by SAR. Therefore, giving phone numbers and spelling out email addresses to common attorneys in the customer service space both have a high chance of failure. So in this system, SR can be failed. So what happens when an SR engine fails to recognize the input? Many times the customer has to repeat themselves over and over to clarify what they are trying to say. This creates a bad customer experience and can लीड टू लॉस सेल. तो जनरली अगर इस एग्जांपल की बात देखा जाए तो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा. इफ समवन इज कॉलिंग यू एंड इफ यू आर नॉट हियरिंग दियर वॉइस क्लियरली, तो यू जस्ट पुट अप योर फोन बिकॉज रिसेप्शन इज बैड. वी आर गेटिंग इनपुट दैट इज ऑल्सो बैड. मे बी उसकी आवाज़ लो हो या मे बी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है. तो दिस कैन बी हैपन विथ एस आर ऑल्सो. अगर एस आर ए एस आर उस वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इनपुट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, देन डेफिनेटली आवर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन ए करेक्ट वे. सो दिस कैन lead to lose the sale, to damage the system, or to system become unsuccessful. So on the bright side, there are many technological advancements. They are finding solution to this problem as our world becomes more reliant on voice devices. In fact, interaction conversational AI application are uniquely positioned with 100% accuracy. So whenever we are talking about conversational AI, so ASR is a very much important because uh, the main component of that particular system is ASR, which responsibility is to listen the input and give output whatever SR has received. So I hope you understand this topic. So thank you for listening me. Thank you.